polarized light incident on the polarizer and then analyzer, then the ratio of intensity of light transmitted by analyzer to the intensity of light transmitted by polarizer is always equal is to equal to cos square the theta, means the square of cosine of angle between the axis of polarizer and axis of analyzer. So this is called as the law of modulus, that is I divided by I zero, where I is the intensity of light transmitted by analyzer and I zero is the intensity of light transmitted by polarizer, is equal to cos square theta, where theta is the angle between axis of polarizer and analyzer. This is the law of modulus, that is I divided by I zero equal to cos square theta. It's very easy and simple. इतना ही याद रखना है आपको, बाकी कुछ नहीं याद रखना. Then we have started the optical activity. So what is the optical activity? So when the plane polarized light passes through a certain crystals, some special types of crystal, just like the quartz crystal or the sugar crystal और शुगर सोल्यूशन, इस टाइप के क्रिस्टल्स में से जब लाइट पास होता है, कौन सा लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट. देन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिस प्लेन के अंदर वाइब्रेट हो रहा था, वाइब्रेशंस थे प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, दैट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन गेट रोटेटेड. प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो रोटेट होता है थ्रू सम एंगल, कुछ एंगल के साथ रोटेट होता है. डायग्राम के अंदर बताया था मैंने आपको इस टाइप से. जस्ट वन मिनट. See this diagram. So when the plane polarized light passes through such type of crystal, then the plane of vibration, देखो ये plane के अंदर वाइब्रेट हो रहा था, ये बाद में plane of vibration रोटेट होता है with some angle, कुछ एंगल के साथ. तो such a crystals are called as the optically active crystal. इस टाइप के जो crystals रहते हैं, जो क्या करते हैं optically active crystal, they rotate the plane of vibration of the plane polarized light. प्लेन पोलराइज लाइट जब पास होता है इस टाइप के सॉल्यूशन या क्रिस्टल में से, सो उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रोटेट करता है इन दिस. नाउ देयर आर टू केसेस व्हेन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज रोटेटेड इन द राइट हैंड साइड और क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल. एक क्रिस्टल जो रहता है वो क्या करता है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रोटेट करता है. कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सी ईयर डायग्राम, यहाँ पे रोटेशन कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको, और वी कैन से दैट द राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर रोटेट करता है. such a crystals are called as the dextro rotatory crystals, or it is also called as the right handed crystal. The crystal which rotates the plane of vibration of plane polarized light in the clockwise direction or right hand direction, such crystals are called as the dextro rotatory crystal, or it is also called as the right handed crystal. The another type of crystals are there which rotates the plane of vibration in the left hand side, means in anti-clockwise direction, and a theta is side में आएगा in this way, इस side में anti-clockwise direction में plane of vibration rotate करेगा with some angle. Such a crystals are called as levorotatory crystal, or it is also called as the left-handed crystal. लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को, दैट साइड इज आल्सो कॉल्ड एज द लेफ्ट हैंडेड क्रिस्टल, और इट इज कॉल्ड एज द लीवो रोटेटरी क्रिस्टल्स. So there are two types of. First we studied about what is optical activity. What is optical activity, or what is optical activity? So when the plane polarized light passes through some special type of crystal like the sugar crystal, sugar solution, or quartz crystal, then the plane of vibration of plane polarized light get rotated with some angle. This activity, this phenomena is called as the optical activity, and the crystal which rotates the plane of vibration of plane polarized light, it is called as the optically active crystals. There are two types of optically active crystals. The crystal which rotate the plane of vibration towards the right hand side or in
clockwise direction, such a crystals are called as the right-handed or dextro rotatory crystal. The crystal which rotates the plane of vibrations in the left-hand side are the anti-clockwise direction. Such a crystals are called as the levorotatory crystals. Do you understand what are the different types of optically active crystals? Yes, sir. The amount of rotation depends upon the distance travel in the medium. कितना रोटेशन होगा, कितना 30 डिग्री से होगा रोटेशन और 40 डिग्री से होगा, 20 डिग्री से रोटेशन होगा. It depends upon the thickness of the crystal. Crystal में से कितना distance travel करेगा light. If the thickness of the crystal is more, rotation will be more, ज़्यादा rotation होगा. So it depends upon the thickness of the crystal. ये MCQs में आ सकता है. The amount of rotation depends upon distance travel in the medium. यानी जो क्रिस्टल था या सॉल्यूशन था उसमें से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मींस उसका थिकनेस कितना था क्रिस्टल का, उसके ऊपर डिपेंड्स करेगा. Then specific rotation. What is meant by this specific rotation? So the rotation produced by the crystal, having thickness 1 mm. क्रिस्टल का थिकनेस यदि 1 mm है और उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया, so then also the plane of vibration get rotated. Plane of vibration rotate होगा. So जितने एंगल से रोटेट होगा plane of vibration, that angle is called as the specific rotation. The rotation produced by crystal having thickness 1 mm is called as specific rotation. It is denoted by S. S denote करते हैं इसको specific rotation को. We know that when the plane polarized light passes through this type of crystal, optically active crystal, then the plane of vibration get rotated. Plane of vibration rotate होगा. But 1 mm thickness crystal जितना rotate करेगा, that is called as the specific rotation, and it is denoted by S. S से denote करते हैं. It is found that the specific rotation is inversely proportional to wavelength square. The specific rotation यानी 1 mm का thickness का crystal कितना rotation करेगा, that is called as specific rotation. This specific rotation is inversely proportional to wavelength square. Wavelength square के साथ inversely proportional का relation है. Means जिसका wavelength कम है, if the wavelength of incident light is less, then specific rotation is more. If the wavelength is more, then specific rotation is less, because the relation is inversely proportional. MCQs में क्वेश्चन आया तो आपको आना चाहिए. So we know that the wavelength of violet color is minimum and the wavelength of red color is maximum. Red color की तरफ जैसे जाओगे तो wavelength increase होती है. So violet color will produce more. The specific rotation for violet color is more than the red color. Specific rotation violet color का ज्यादा रहेगा, red color का कम हो. यदि मैंने आपको पूछा कि specific rotation produced by yellow color and green color और yellow color ने specific rotation produce किया तो कौन सा specific rotation ज्यादा रहेगा? So क्या आंसर लिखोगे आप? ग्रीन कलर का स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा रहेगा. हाँ, because yellow wavelength ज्यादा है green से, because red, orange, then yellow. एंड तीसरे नंबर सर पे ये सर ये जो स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा होता कम होता ये एम्पलीट्यूड की वजह से होता है क्या? वेवलेंथ बताए ना, रिलेशन बताए, देखो सी के ऊपर रिलेशन दिख रहा है, एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ को. ओके सर. इफ द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल इज कांस्टेंट, थिकनेस मैंने देख, स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द क्रिस्टल. थिकनेस कितना है क्रिस्टल का उसके ऊपर डिपेंड्स करेगा. बट इफ आई कीप द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल 1 mm, 1 mm का ही रखा मैंने क्रिस्टल का थिकनेस, और आई एम गोइंग टू चेंज द कलर, लाइट का कलर चेंज कर रहा हूं, तो थिकनेस तो सेम है, कांस्टेंट है. सो देन इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड्स करेगा. कैसे रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का. जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रोटेशन कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा. सो इट इज ऑब्जर्व दैट द वायलेट कलर rotate the plane of vibration nearly 4 times more than the red color.
रेड कलर से वॉयलेट कलर कितना रोटेशन ज्यादा करता है? 4 टाइम्स मोर. ये ऑब्जर्व किया गया है. Because the violet color has the very less wavelength as compared to red color. Red color 7000 something plus रहती है एंगस्ट्रॉम यूनिट में, और violet color का 4000 के आसपास वेवलेंथ रहता है. और रिलेशन कैसे स्क्वायर है, 1 डिवाइड बाय लैम्बडा स्क्वायर है, सो दैट्स व्हाई ज्यादा होगा. सो violet color produce the 4 times more rotation than the red color. रेड कलर की लाइट से ज्यादा. सो दिस इज अबाउट द क्रिस्टल हैविंग थिकनेस 1 mm. 1 mm का क्रिस्टल जो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? स्पेसिफिक रोटेशन. I replace the crystal by the solution because there are some solutions also which also rotate the plane of vibration. कुछ solutions है, वो solution में से light pass होने के बाद भी plane of vibration rotate होता है. So then how will you define the specific rotation in case of solution? In case of solution यदि आपको define करना है तो कैसे डिफाइन करोगे स्पेसिफिक रोटेशन? सो देयर इज अनदर डेफिनेशन, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन. द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर and for the given wavelength is defined as rotation of plane of vibration of plane polarized light produced by a solution of length 1 centimeter when the concentration of solution is 1 gram per cc. यानी क्या कि एक ग्लास ट्यूब लिया मैंने, ट्यूब का लेंथ कितना है? 1 डेसीमीटर. 1 डेसीमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर लेंथ का ट्यूब लिया मैंने, ग्लास का ट्यूब लिया, और उस ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन फिलअप किया. कौन सा? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, यानी शुगर सॉल्यूशन वगैरह उसमें फिल किया. बट व्हाट इज द कंडीशन? कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का? 1 ग्राम पर सीसी, मीन्स 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. cubic centimeter, cc means cubic centimeter means centimeter cube. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर. 1 ग्राम पर सीसी, इतने कॉन्सेंट्रेशन का लिक्विड यदि मैं एक ट्यूब में फिलअप करता हूँ, ट्यूब का लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर मीन्स 1 डेसीमीटर. then when the plane polarized light passes through that tube, then it also rotates the plane of vibration. so इस टाइप की जो ट्यूब है, इस टाइप की जो ट्यूब है, उसने जो रोटेशन प्रोड्यूस किया, कौन सी ट्यूब? 10 सेंटीमीटर की ट्यूब है. उसमें सॉल्यूशन कितने कॉन्सेंट्रेशन का है? 1 ग्राम पर सीसी. और उस सॉल्यूशन में से जो पास किया मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सो उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जितना रोटेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्यूशन. स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन. व्हेन और कंडीशंस डाल दिया मैंने. कौन सी कंडीशन डाला? व्हेन द गिवन टेम्परेचर एंड द गिवन वेवलेंथ. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर वेवलेंथ जो भी दिया है, उस टेम्परेचर और वेवलेंथ के लिए जो रोटेशन. और फॉरगेट इट, आपको इतना याद रखना है कि द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय द solution of length 1 decimeter while the concentration of solution is 1 gram per cc. The rotation produced by solution of 10 centimeter when the concentration of solution is 1 gram per cc, it is called as the specific rotation of solution. So the specific rotation of solution is given by S equal to theta divided by LC. So what is theta? Theta is the amount of rotation produced. जो rotation produce होता है, that is given by theta. See this diagram. ये जो रोटेशन प्रोड्यूस किया, कितने एंगल से रोटेट हुआ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन? थीटा इतने एंगल से. तो दिस इज थीटा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन. थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन. L is the length of tube. C is the concentration of solution. By using this formula, we can find the specific rotation of solution, where L is in the decimeter. L length जो थी ट्यूब की और solution की, वो कैसे लिया हमने? सेंटीमीटर में नहीं लिया, डेसीमीटर में लिया. मीन्स जब 10 सेंटीमीटर होगा तो मैं क्या लिखूंगा? 1 डेसीमीटर. आई विल राइट ओनली 1 हियर. जब 20 सेंटीमीटर होगा सॉल्यूशन का लेंथ, तो आई विल राइट 2 ओनली. Do you understand? So length of solution in the decimeter. If I have to take the length in the centimeter, centimeter में यदि length ले रहा हूँ solution का, so I have to correct this formula.
So the corrected formula is S equal to 10 into theta divided by LC, where L is in centimeter. L decimeter में लिया तो 10 से multiply नहीं होगा. But when we take the length of solution in centimeter, then we have to use this formula, that is multiplied by 10. So here L decimeter में नहीं लिखोगे, आप सेंटीमीटर में लिखोगे. और ये फॉर्मूला यूज करते हो आपको लेंथ डेसीमीटर में लेना है. Do you understand? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So now there is the polarization by reflection. As per syllabus में नहीं है, but छोटा सा है तो मैं ले लेता हूँ. Sometimes MCQs वगैरह आ गया गलती से तो आपको आना चाहिए. So polarization by reflection, और it is also called as the Brewster's law. इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी लेना है हमको. Polarization by reflection, Brewster's law. So what is the Brewster's law or what is the polarization by reflection? So light जब reflect होता है कोई भी transparent material से, so then also we can polarize the light. So when the light, unpolarized light, incident on any transparent surface, कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर जब इंसिडेंट होता है उसका अनपोलराइज लाइट विथ सर्टन एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होना चाहिए, एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि होगा तो when the unpolarized light incident on the transparent surface with particular angle, then the reflected light is the plane polarized light. एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर मैंने क्या किया, unpolarized light incident allow किया to incident on the transparent surface. Now I observe the reflected light को observe किया. Here I have changed the angle of incidence vary किया मैंने, change किया. So at particular value of angle of incidence, it is observed that the reflected light is the plane polarized light. And that particular angle of incidence for which we get the reflected light as a plane polarized light, that angle of incidence is called as the angle of polarization. That angle is called as the angle of polarization. जिस angle of incidence के लिए reflected light plane polarized मिलता है, उस angle of incidence को क्या बोलते हैं, angle of polarization और polarizing angle is called as the angle of polarization or polarizing. बाकी के एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज नहीं मिलेगा, बट फॉर दिस एंगल, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज द प्लेन पोलराइज लाइट. डू यू अंडरस्टैंड पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन? हाँ सर. नाउ सी द डायग्राम. दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट, सिंबल से पता चल जाता है. This is normal to the surface of the transparent medium. ये transparent glass medium लिया मैंने, glass का plate लिया, उसके ऊपर light incident हुआ unpolarized. The angle made by incident ray with the normal at the point of incidence, it is called as the incident angle, angle of incidence. This is denoted by IP से denote किया मैंने. What is IP? Angle of incidence. Then the part of light is reflected. Part जो था light का reflect हुआ. ये क्या हुआ, आईपी क्यों लिखा मैंने, पी क्यों लिखा, दैट इज द पोलराइजिंग एंगल. व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू पोलराइजिंग एंगल, व्हेन द लाइट इंसिडेंट विद पोलराइजिंग एंगल, देन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. देखो रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या है, एक ही टाइप के वाइब्रेशंस है. जो एरो से दिखाए थे वाइब्रेशंस, पैरेलल वाइब्रेशंस रिमूव हो गए. आई गॉट द ओनली परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस. दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. We know that the angle of incidence and angle of reflections are the always same. Angle of incidence or angle of reflection हमेशा same रहता है. So if this angle is polarizing angle, then this angle is also polarizing angle. Means if this angle is IP, then this angle is also IP. And the part of light is refracted. Part of light जो रहता है refract होता है. Refracted light is the partially polarized because इसमें से ये वाला component बहुत सारा निकल गया. Then also some component of perpendicular vibration is present. ये complete polarized plane polarized light नहीं है, refracted light. It is a partially polarized light. Some component of perpendicular vibration is also present in this light. This light can. So angle of refracted ray with the normal, it is called as the angle of refraction.
So this is the angle of refraction. It is denoted by RP. Why it is denoted by RP? This is the angle of refraction when the angle of incidence is polarizing angle. Light incident with polarizing angle, then the angle of refraction is denoted by RP. RP से denote किया. Now what is the Brewster's law? Brewster's law क्या बताता है? According to Brewster's law, if the light incident on any transparent material एच एन पोलराइजिंग एंगल के साथ यदि लाइट इंसिडेंट होता है, देन रिफ्लेक्टेड रे मींस दिस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे यानी ये वाला रिफ्रैक्टेड रे, देन द transparent material at polarizing angle, then the reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other. रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री का रहता है. What is the Brewster's law? Brewster's law state that when the unpolarized light incident on any transparent material at an polarizing angle के साथ इंसिडेंट होता है, then the angle between the reflected ray and refracted ray is 90 degree. They are perpendicular to each other. The reflected and refracted ray are perpendicular to each other. This is called as the Brewster's law. Do you understand? Yes, sir. Now there is a small derivation is there. So see here, what is the CBD? CBD, ये angle कितना 90. According to Brewster's law, this angle is equal to 90 degree. This angle is equal to 90 degree. Now what is this angle? Now we'll take this summation. So normal थी इस side का summation कितना है? 180. आपको पता है ना? This angle is 180. So what is 180? IP plus 90 plus RP, that is equal to 180. 180 में से 90 minus हो गया. Means we can write IP plus RP equal to 90 degree. IP means polarizing angle. And what is RP? RP is called as the angle of refraction when the light incident with polarizing angle or angle of refraction. Incident angle with polarizing angle IP plus RP equal to 90 degree. This is very important equation is there. इसका बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप. IP plus RP equal to 90 degree. कैसे आया बताए? सिंपल बताया. इसका समेशन जो था 180 था, 180 में से 90 माइनस हो गया. We have got IP plus RP equal to 90 degree. Or we can write, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया, आपको आरपी फाइंड आउट करना है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. आरपी इक्वल टू 90 माइनस आईपी और आईपी इक्वल टू 90 माइनस आईपी. आरपी इक्वल टू 90 माइनस आईपी और आईपी इक्वल टू 90 माइनस आरपी. ये रीअरेंज कर सकते हैं जैसा चाहिए. नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस divided by sine of angle of refraction. So what is the angle of incidence? IP. What is the angle of refraction? RP. So mu equal to sine IP divided by sine RP. What is RP? RP equal to 90 minus IP. ये फॉर्मूले से निकल हमने. RP equal to 90 minus IP. So RP की वैल्यू पुट अप करेंगे हम. RP equal to 90 minus IP. So 90 minus IP equal to 90 minus sin IP divided by sin 90 minus IP. So that is equal to cos IP. ये क्या हो जाएगा? 90, ये वैल्यू पुट अप किया 90 minus IP. So it will become cos IP. 90 minus IP equal to cos sin 90 minus theta equal to cos theta. Similarly, cos IP. So the sin IP divided by cos IP equal to tan IP. Sin IP divided by cos IP equal to tan IP. So the refractive index mu equal to tan IP. So both the formulas, this one and this one, both the formulas are very, very important. Do you understand what is the polarization by reflection and what is Brewster's law? Yes, sir. Yes, sir. So the next one is the application of polarization. So the application of polarization is there is a LCD के अंदर यूज करते हैं हम. What is that?
पोलराइजेशन जो एक्टिविटी था, पोलराइजेशन का जो पैमाना था वो यूज दैट इज इनटू द एलसीडी। एलसीडी यानी क्या रहता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर यूज करते हैं। सो व्हाट इज क्रिस्टल? सब ये फॉरगेट इट, ये लिक्विड रहता है, ये रहता है, फॉरगेट मॉलिक्यूल्स, एटम। मैं यहाँ पे बताता हूँ। लिक्विड क्रिस्टल है ना, इस टाइप से रहता है। यदि इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया, व्हेन वी हीटेड द लिक्विड क्रिस्टल, देन व्हाट हैपन, दिस कम्स इनटू द लिक्विड क्रिस्टल। देखो ये क्रिस्टल था, क्रिस्टल को हीट किया, हीट करने के बाद क्या मिला आपको? लिक्विड क्रिस्टल मिला। इन दोनों भी फेज प्रेजेंट है यहाँ पे, लिक्विड एज वेल एज क्रिस्टल फेज, बोथ द फेजेस आर प्रेजेंट हियर, सो दैट इज कॉल्ड द लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल को और ज्यादा हीट किया तो फाइनली विल गेट द लिक्विड, लिक्विड मिलेगा। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स है। लिक्विड को यदि कूल किया, कूलिंग किया, तो फिर से कौन सी फेज मिलेगी आपको? लिक्विड प्लस क्रिस्टल। लिक्विड और क्रिस्टल दोनों फेज प्रेजेंट रहेगी। फिर से कूलिंग किया तो आगे यू विल गेट द क्रिस्टल फॉर्म, फिर से क्रिस्टल फॉर्म के अंदर मिलेगा आपको। जस्ट आइडिया दिया आपको लिक्विड क्रिस्टल क्या है। In liquid crystal phase, liquid crystal can flow like liquid, but there is certain regular arrangement of atoms or molecules. Flow होता है liquid form के अंदर, but उसके अंदर atoms और molecules का एक particular arrangement होता है. They exhibit the property like surface tension, viscosity, adiabatic compressibility, etc. The liquid crystal molecules are organic molecules having long and broad shape. There is significant force of attraction between molecules and so and so. So forget it, just मैंने आइडिया दिया आपको लिक्विड क्रिस्टल क्या। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, कोई पूछेगा नहीं आपको। उसके शेप, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। नाउ व्हाट इज द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? आवर एम इज टू स्टडी द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। Nematic liquid crystals can rotate the plane of polarization of one plane polarized light. ये जो क्रिस्टल्स रहते हैं, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस क्रिस्टल्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की? कि ये लिक्विड क्रिस्टल कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जस्ट लाइक द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, द लिक्विड क्रिस्टल्स आल्सो रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो रहता है वो रोटेट करता है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। हो चुका है तुम्हारा। Now see here what happened. What is the liquid crystal display? So liquid crystal display में क्या होता है? Liquid crystal is placed between two thin glass plates. ये glass plates है, glass plate के अंदर ये जो part है, this part is the liquid crystal. ये क्या है? Liquid crystal है। The liquid crystal is placed between two thin glass plates. Inner side of the glass plate is coated with thin metal film. मेटल फिल्म से कोटेड रहता है इसका अंदर की साइड, ये वाली अपर साइड एज वेल एज लोअर साइड। क्यों रहता है? तो टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए कांटेक्ट होना चाहिए, इसलिए मेटल, थिन मेटल प्लेट यूज करते हैं अपर साइड में और लोअर साइड। दिस असेंबली इज केप्ट बिटवीन द टू पोलराइड्स। एक लिक्विड क्रिस्टल लिया, लिक्विड क्रिस्टल कैसा है? ग्लास के केस के अंदर पैक है। यहाँ पे एक मेटल प्लेट रखा है, थिन मेटल प्लेट, और यहाँ पे एक थिन मेटल प्लेट रखा है। नाउ दिस असेंबली इज केप्ट बिटवीन द टू पोलराइड्स। दिस इज द पोलराइड 1 एंड दिस इज द पोलराइड 2। ये पोलराइड कौन से वाइब्रेशन पास करेगा? पैरेलल वाइब्रेशन पास करेगा। पोलराइड 1 कैसा है? इट विल passes the parallel vibrations, और पोलराइड 2 कैसा है? इट विल passes the perpendicular vibrations। ये वर्टिकली रखा है, जिसकी इसके ये जो पोलराइड है इसके अंदर जो स्ट्रिप है वो कैसे है? वर्टिकल है, अलोंग वाई एक्सिस। इसके अंदर जो स्ट्रिप है दैट इज अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग स्ट्रिप है, तो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन पास करेगा, ये पैरेलल वाइब्रेशन पास करेगा। एट द एंड ऑफ दिस अरेंजमेंट देयर इज द मिरर, यहाँ पे मिरर रहता है। So this is about the liquid crystal display, construction of the liquid crystal display. How the liquid crystal display work करता है, कैसे work करेगा? So see here,
When the unpolarized light incident on polarized one, this is the unpolarized light. See here, this is the unpolarized light. When incident on the polarized one, and upper polarized के ऊपर incident होगा, so क्या होगा? This unpolarized light consists of the vibration in all the possible direction. ये polarized कौन सा light pass करेगा? Which is parallel to its axis. इसके axis को जो parallel होगा वो. And means in simple words, it passes the parallel vibration. इसमें से क्या मिलेगा? After passing through the polarized one, we get the plane polarized light. कैसी मिलेगी light आपको? Plane polarized light. Plane polarized light, or we can say that they will get parallel vibrations. Parallel vibrations. जो arrow से बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? Parallel vibrations. That is parallel to plane of paper. Parallel vibrations. Now these parallel vibrations, the light consists of the parallel vibration incident on the liquid crystal. Liquid crystal के ऊपर incident होगा. What is the property of liquid crystal? The liquid crystal rotates the plane of vibration. Plane of vibration को rotate करता है. कितने डिग्री से rotate करता है? 90 डिग्री से rotate करता है. 90 डिग्री से rotate करेगा. यानी ये vibrations कैसे हो जाएंगे? Perpendicular vibrations हो जाएंगे. ये कैसे थे vibrations? Parallel vibrations थे. यहाँ पे plane polarized light मिला आपको because of this polarized. Unpolarized light incident हुआ because of the first polarized. We have got the plane polarized light having parallel vibrations. When this parallel vibration passes through the liquid crystal, then what happened? Liquid crystal क्या करेगा? उसका plane of vibration rotate करेगा 90 degrees. Means this parallel vibration becomes the perpendicular vibrations. ये parallel vibrations क्या हो जाएंगे? Perpendicular vibrations हो जाएंगे because it is perpendicular to the plane of paper. इसको 90 डिग्री से rotate कर दिया तो perpendicular vibrations. Now this perpendicular vibration incident is second polarized. Second polarized के ऊपर incident हो गया perpendicular vibration. Now second polarized क्या करेगा? Second polarized कैसा है? It allows only it passes the perpendicular vibration. देखो इसके ऊपर dots है. ये parallel vibrations allow करता है. ये कौन से vibrations को pass करेगा? Perpendicular vibrations को. So यहाँ पे ये perpendicular vibration ये second polarized में से भी pass हो. Do you have any problem up to this? Do you have any problem up to this? No, sir. No, sir. Simple. यहाँ पे No, sir. हुआ. It converts the unpolarized light into polarized light, having the parallel vibrations. This parallel light having parallel vibration incident on liquid crystal. Liquid crystal rotates its plane of vibration by 90 degrees. So this parallel vibration becomes the perpendicular vibrations. This perpendicular vibration incident on the second polarized. Second polarized passes this vibration because the axis of polarized and the axis of this vibration is same. दोनों का axis कैसा parallel है, so वो उसको pass करेगा. This perpendicular vibration incident on the mirror. At the end of this arrangement, there is the mirror के ऊपर incident हो. Now what happened? Mirror will reflect this light. ये जो भी perpendicular vibrations थे, mirror क्या करेगा? उसको reflect करेगा. Reflect करने के बाद it incident on the second polarized. Second polarized पे incident होगा. इसका plane of vibration और इसका axis होता है, they are parallel to each other. So this polarized passes this perpendicular vibrations. ये perpendicular vibrations को pass करेगा. Now this perpendicular vibration incident on the liquid crystal. Liquid crystal क्या करेगा? 90 degree से plane of vibration rotate करेगा. So these perpendicular vibrations becomes the parallel vibrations. After passing through the liquid crystal, perpendicular vibrations becomes the parallel vibrations. Parallel vibrations. Okay. Now this parallel vibration incident on the polarized one. Polarized one के ऊपर incident हो गए. Polarized one का axis और parallel vibration का axis parallel एक दूसरे को. So the polarized one will pass the parallel vibration. Parallel vibration pass करेगा and finally will get the parallel vibrations. कुछ तो भी light मिलेगा आपको यहाँ पे. Do you have any problem up to this? No, sir. Now, what is the next step? Next step क्या होता है कि when we apply, this is in absence of electric field. यहाँ पे देखो metal plates ली थी मैंने liquid crystal पर. यहाँ पे एक metal plate है और यहाँ पे एक metal plate.
टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए दो मेटल प्लेट्स रखी है, थिन मेटल प्लेट्स कॉन्टेक्ट करने के लिए, सिर्फ यहाँ पे कॉन्टेक्ट होना चाहिए, ये सब मेटल प्लेट्स। सो नाउ यहाँ पे क्या था, मैंने इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया, नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं किया मैंने यहाँ पे। When electricity, in absence of electricity, I have explained the working. In absence of electric field, I have explained the working. Now what happened when we supply the electric field? Now I have supplied the electric field. यहाँ पे क्या किया मैंने, electric field supply. Now this is in the absence of electric field. Now in presence of electric field. In presence of electric field, liquid crystal does not rotate the plane of vibration. In absence of electric field, the LCD means not LCD, liquid crystal क्या करता है, plane of vibration rotate करता है, कब, in absence of electric field. But in presence of electric field, the liquid crystal does not rotate plane of vibration. Plane of vibration rotate नहीं करता है. So now I have applied the electric field here. So then what happened? The unpolarized light incident on polarized one, it passes the parallel vibration. This parallel vibration incident on the liquid crystal में से पास हो गए, इसका plane of vibration change नहीं होगा, plane of vibration change नहीं होगा, rotate नहीं होगा, because electric field apply किया। Now this जैसे के वैसे parallel vibration incident on polaroid 2 के ऊपर parallel vibration incident हो गए। Now polaroid 2 के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद polaroid 2 क्या था, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन पास करता है। ये वाइब्रेशन कौन सा है, पैरेलल वाइब्रेशन है, इसको पास नहीं करेगा। polaroid 2 क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। polaroid 2 क्या कर देगा, ब्लॉक करेगा। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट डार्कनेस। यहाँ पे क्या मिलेगा, डार्कनेस। फर्स्ट केस में क्या मिल रहा था, यहाँ पे फर्स्ट केस में लाइट मिल रहा था, यहाँ पे ब्राइटनेस मिल रहा था आपको, you are getting brightness here. In second case, when we apply the electric field, I will get the darkness. यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, darkness मिलेगा। Do you understand? When we supply the electric field, we will get darkness. When we does not supply the electric field, we will get the brightness. This is the main function of the LCD, liquid crystal display. Now, how the liquid crystal display is used in the 7 segment? 7 segments क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। ये ब्लॉक करता है लाइट को। When we apply the electric field, it blocks the light. Light does not come through the polaroid one, hence it appears dark चाहिए था, it appears dark. In presence of electric field, reflected light does not take place from mirror, hence light is not transmitted through polaroid one, hence it is appear dark. बराबर, ये फर्स्ट केस के अंदर ब्राइट मिलता है आपको और सेकंड केस के अंदर डार्क मिलता है। This concept is employed in 7 segment display. Now what is 7 segment display? So this is the 7 segment display. जो अपना कैलकुलेटर रहता है, डिजिटल वॉच रहती है, उसके अंदर जो यूज करते हैं हम, that is the 7 segment display. इसके अंदर क्या करते हैं हम, LCD यूज करते हैं। In 7 segment display, 7 segments are arranged in the form of 8 as shown in figure. By applying electric field to the set of different segments, different numbers can be displayed. ये सेगमेंट्स के अंदर हम 9 तक के नंबर बना सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर बना सकते हैं, आपको पता है, मैं फिर से रिपीट करने की जरूरत है। By applying electric field to the set of different segment, this is called as the segment. This is A segment, B segment, C segment, D segment, E segment, F segment, and this is G segment. 7 segments are there, so that is it is called as the 7 segment display. The display number appears dark on the bright background. डिस्प्ले का नंबर जो रहता है कैसा रहता है, डार्क दिखता है, कब, ऑन द ब्राइट बैकग्राउंड। ब्राइट बैकग्राउंड के अंदर डिस्प्ले कैसा दिखता है, डार्क दिखता है। 7 segment display are used in colors also. Requires external source of light. इसको external source of light लगता है और कलर में भी दिखता है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, ये डिस्प्ले जो रहता है, डिस्प्ले के अंदर LCD यूज करते हैं। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो लाइट पास नहीं होता है, सो ये वाला पार्ट आपको डार्क, सपोज A B C ये 3 लिया मैंने, 7 A B C, सपोज A सेगमेंट लिया मैंने, A सेगमेंट कैसा है, इस LCD है, लिक्विड क्रिस्टल है। लिक्विड क्रिस्टल में क्या होता है,
जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो डार्क दिखेगा मुझे, और जब मैं लिक्विड फील्ड नहीं अप्लाई करूंगा तो ये ब्राइट दिखेगा मुझे. व्हेन आई अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड देन आई विल गेट इट डार्कनेस, ये वाला डार्क हो जाएगा. और जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करूंगा तो ये वाला ब्राइट हो जाएगा. इसके पीछे सोर्स रहता है लाइट का सोर्स उसमें से पास नहीं होगा. डू यू अंडरस्टैंड? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ये डार्क दिखेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करूंगा तो ये ब्राइट दिखेगा. सो इस टाइप से नंबर्स बना सकते हैं. ये 0 बनाया, ये 1 बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9 नंबर्स बना सकते हैं. जो डिस्प्ले डार्क रहेगा वो वाला नंबर आपको दिखेगा. यदि मुझे 1 बनाना है तो ये जो बाकी के सेगमेंट से इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करूंगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ. जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो वाला डार्क दिखेगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया वो वाला ब्राइट दिखेगा आपको. सो ये ब्राइट बैकग्राउंड कैसा रहता है? ब्राइट बैकग्राउंड रहता है, तो आपको डार्क वाला दिखता है. नंबर कौन सा दिखता है? डार्क वाला. डार्क वाला यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो वाला नंबर आपको दिखता है. वहां पे लाइट नहीं आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद लाइट पास नहीं होते हैं, सो आपको डार्क दिखता है. इन दिस वे वी कैन फॉर्म एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9. 0 से 9 के बीच का नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं. एक्चुअल में अरेंजमेंट कैसा रहता है? दिस इज द पोलराइड वन. दिस इज द 7 segment display, means LCD, liquid crystal display. This is also LCD liquid crystal display. सैंडविच किया है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई. दिस इज सेकेंड पोलराइड. यहाँ पे मिरर रहता है और इधर ये जो डिस्प्ले इस साइड में बताया, डिस्प्ले इस साइड में बताना चाहिए. तो उसने लास्ट में डिस्प्ले बता दिया. यहाँ पे डिस्प्ले बता दिया उसने लास्ट में. एक्चुअली यहाँ पे मिरर रहता है और फिर यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए. हमने जो पढ़ा अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे मिरर होना चाहिए था और यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए था. सो जो लाइट पास होगा, जो कलर का लाइट पास होगा वो कलर आपको, आप यदि जिस यहाँ पे इलेक्ट्रिक हर सेगमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, सो जिस सेगमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो वाला सेगमेंट डार्क दिखेगा आपको, नंबर दिखेगा आपको. और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया वो नंबर नहीं फॉर्म होगा, वहां पे आपको ब्राइटनेस दिखेगा, तो वो दिखेगा नहीं आपको. इन दिस वे ये तो रिवर्स भी कर सकते हैं हम इसको. बैकग्राउंड डार्क रख के जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो कट हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया वो ब्राइट दिखेगा. इस टाइप से दोनों टाइप से बच सकते हैं. अदर एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन, देखो ये ग्लास जो रहता है अपना, सनग्लासेस वगैरह यूज करते हैं आप गॉगल्स के अंदर, उसके अंदर जो मटेरियल यूज करते हैं वो पोलराइजर रहता है. तो उसमें से एक ही टाइप के वाइब्रेशन पास होते हैं, तो हार्मफुल इंटेंसिटी कम हो जाती है लाइट की. Passing through the polarizer, the intensity of light get reduced because it forms the one type of vibration. एक टाइप के वाइब्रेशन पास करता है, दूसरा टाइप जो रहता है उसको ब्लॉक करता है, तो इंटेंसिटी कम होती है. सो आंखों को रिलीफ मिलता है. सो इस गॉगल्स के अंदर भी यूज करते हैं पोलराइजर. देन व्हाट इज दिस हियर? A plastic lens under the compression shows the stress by fringes when the view between the cross polarizer helps the analysis. ये लेंस लिया, प्लास्टिक लेंस अंडर दी कॉम्प्रेशन, इसको प्रेस किया दोनों साइड से प्लास्टिक लेंस को, शोज द स्ट्रेस बाय रिफ्रिंजेस. यानी ये इस टाइप से देखो, प्रेस करने का इस टाइप से दिखता है. व्हेन viewed between the cross polarizer help in analysis of stress. स्ट्रेस कितना है वो उसका एनालिसिस कर सकते हैं. सर्कुलरली पोलराइज एंटीना और जीपीएस सिस्टम के अंदर कुछ तो भी सर्कुलर पोलराइज एंटीना यूज वगैरह करते हैं. डिटेल्स वगैरह कुछ दिए नहीं है. सो we have completed the third part of the unit number first, that is polarization. Polarization यहाँ पे complete होता है.
आई विल शेयर दी नोट्स। थोड़ा सा मुझे चेंजेस करने का था नोट्स में, इसलिए रह गया, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स थी एज पर ओल्ड सिलेबस से, मैं यदि डाल दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर ये तो पढ़ा है नहीं, ये भी डाल दिया। बट मैं आज कोशिश करता हूँ, आज मैं अपलोड करता हूँ। डू अंडरस्टैंड? डू हैव एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, So I'm going to share the No, attendance sir.